So I have met that. Thank you for being a part of the pre-academic conclave, ma'am. May I request our student representatives to kindly come on the stage and give her a very warm welcome. And I request the audience to give her a loud round of applause. Wonderful, Mrs. Thank you, ma'am. I imagine all as magnificent products of the schools of drama and display art with such integrity. Today I felt that law is art. Law is a painting and a printing. Law is also a game of skill, determination, and dedication. Anything is possible. Any avenue is possible. And what they said today was so moving. You must discover where your passion is and have the courage, the willingness to risk your time and effort for that passion. We opened the show with the National Museum of Australia, and the show is at the Humayun's Tomb Museum with the facilities which are there with the Aga Khan Trust. And whenever you're in Delhi, do make an effort to go and see it. It is very touching to see how Aga Khan Trust has helped us go into a situation where we are dealing with the Aboriginals of Australia and India. Not Aboriginals, but similar people in India. And I think it's great happening. So I think all of you will enjoy that. We are also now in the process of opening. We've just opened at the Mumbai Art Fair where our director has curated one of the most magnificent shows of Tayyab Mehta. It's his 100th anniversary. So, this show of Tayyab will now move to Delhi in a few months, and we'll open along with the Delhi Art Fair on the 4th of February. So, these are some of the major events that are in the offing, apart from other things that we're doing. There's a lot of other events as well. So, PNMA has been a dream for me, which has been fulfilled. Today, we are in the process of building the largest museum probably in India. It is India has to bring out heritage, and we shouldn't let it just disappear. I'm Giranada, chairperson of the Giranada Museum of Art, and I have been interested in Indian art for close to 30 years. My collection started with Rameshwar Bhutta. When I started collecting my home, I started with 2 paintings of Hussain, one Manjeet Baba and one Rameshwar Bhutta.
by Rameshwar Bhuta. This was one of the first paintings I bought for my home. This was the first award that Hussain did on Convocation. For myself or for the museum will eventually all be in the museum. I never had an idea it would be such a major event. I thought it was a small museum to show my collection as it was that time. I think I had some 300 to 400 works. We had a very big emphasis on modern, and we decided to have this retrospective on the screens. The curator came and the director and Rubina Karode was one of our students in Baroda. So she worked on this particular retrospective. And after we had this retrospective, Nasreen has got a lot of recognition. 7 years ago, prolific art collector Kiran Nathar founded India's first private museum displaying modern and contemporary art. In its short history, the museum's influence has already proved extraordinary, and she is one of the most game-changing forces in Indian art, and continues to demonstrate the power of South Asian artists globally. There's 7 exhibitions in total, which we've taken 3 of the important masters, Hussain, Raza and Souza, and we've taken the period of architecture which links them, which is in the foyer of the museum. And then we've taken contemporary links to these arts. So it's all sort of linked together, but it's and significantly relevant for the flourishing art scenario in India and South Asia. It is important. It is said that it is in nature. She was drawn towards art around 1970s as a homemaker, but her love and passion for the arts made her a full-time avid art collector and thinker. She got immersed in learning about artistic practices and discovering immense talent in India that needed more accessibility and more visibility. And a dream was born. As she just said, that she started collecting art, and that art really became larger and larger in the collection. And the dream was to really house this collection with great care and dedicate a museum for nurturing the arts. She was actually aware that India's infrastructure development is signaled in capital cities through roads, flyovers, public buildings, shopping complexes, flyovers, ATMs, banks, but strongly felt the dearth of cultural spaces within these expanding cities. Hence, shaping of a vision began to serve people at large by sharing a collection, but also building a place, a humanitarian institution, through a philanthropic initiative in the name of the Kiran Nathar Museum of Art, and with the premise that museums are not just places to gather art objects or really sites of display, but places of confluence, places of conversations, places of community building, and that is how KNM began its journey. It is said that great acts are made up of small deeds, and hence these small deeds really started instilling in us a belief in the transformative power of art and how art really can bring people together. The connections that were lost since we were under the British rule, those bridges had to be made, those bridges had to be built to connect art and people and bring them together under one roof. And I am sorry that I missed all the wonderful, compelling speeches that happened this morning, but as I heard,
the gentleman speak, I was wondering that was completely my loss, because you have great artists sitting here, Anupam Sood, who I've known for many, many years, Arundhati ji is here, and several others of you, who really have been working in the field of art and for humanitarian purposes. And not to forget this institution, because what I realized in my journey and being with Mrs. Nagar, working closely with her through the 15 years, is that any institution for that matter, museums are not just buildings. Museums are made by people and for the people. And so are institutions, educational institutions and otherwise. It's all because of people and how people run it, how people vision it, and how people take it forward to serve the society, serve the community. Each one of you sitting there, I remember the time when I used to sit there and when I was going through my education and being a student. And then when I became a teacher in my first life, which was about 18 years when I taught at university, I realized that as a teacher, the first thing you understand is that you are a learner. You will be learning all your life. And that process never ends, what we call as education. And all of you who have been in this Pro-Chancellor Dr. Daulat Singh जी, और जिनको आज यहाँ पर सम्मान दिया जाना है, जिनके अभी वक्तव्य आप सभी लोग सुन रहे थे, श्रीमती अनुपम सूद जी, श्री अरुंधति नाग जी, जिनको एक बड़ा सम्मान है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान रहता है पद्मश्री, उन सम्मानों में आपको मिला है। श्री धनराज पिल्ले जी, आप भी पद्मश्री सम्मान और अर्जुन अवार्ड से लेकर के हमारे देश और विश्व में अपना देश का नाम रोशन किए हैं। श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय और देश के प्रतिष्ठित वकील हैं। श्रीमती किरण नादर जी, प्रसिद्ध चित्रकार, पद्मश्री सम्मान जिनको मिला है। और इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर योगेश उपाध्याय जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव, और हमारी सामने की पंक्ति में बैठे प्रतिष्ठित विद्वान, और जिनके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है, प्रिय स्नातक के छात्र छात्राएं, लगातार आपने 7 व्याख्यान सुन लिए हैं और इसके और हम देख भी रहे थे कि कोई अपने स्थान से उठ भी नहीं रहा है, और जहाँ एक आध दो कुछ अपनी जगह से यहाँ वहाँ हो रहे थे, तो चांसलर मैडम जो है रुचि जी, उनकी नज़र भी लगातार आप तक पहुँच रही थी, जा रही थी। तो आप हमारे जो यहाँ पे प्रतिष्ठित हर क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो विद्वजन है, उनको आप सुन रहे थे, उनके अनुभव यहाँ पे उन्होंने साझा किए हैं, और उनका अनुसरण आप यदि 1% भी कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और ITM विश्वविद्यालय में मेरा पहली बार आना हुआ है। ये 4था दीक्षांत समारोह में मेरा आना है। अभी 7 नवंबर को ही मैंने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में अध्यक्ष के पद पर अपनी ज्वाइनिंग दी है, और इसके पहले 2 भोपाल और एक अभी बालाघाट, और 4था ये दीक्षांत समारोह है मेरा यहाँ पर। परंतु जिस प्रकार की जो कल्पना थी, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे देखने को सुनने को मिला है। इसके लिए विशेष तौर पे आप बधाई के पात्र हैं। इसके बाद लंच के बाद आपको कुछ दीक्षा भी दी जाएगी, और आप सबको डिग्रियां भी यहाँ से मिलेंगी, और फिर अपने अपने क्षेत्रों में आप जा कर के और प्रतिष्ठित जो आपका अनुभव है उसका लाभ इस देश को भी मिलेगा। हमारे जो प्रो चांसलर हैं डॉक्टर दौलत सिंह जी, अपने प्रस्तावना में उन्होंने लगभग सभी बात कर दी, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा
है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, और परंपरा और आधुनिकता से लेकर के बहुत सी बातें आपने की हैं। और हमारे जो अवार्डी हैं उन्होंने भी अनुभव के माध्यम से, चाहे फिल्म की बात हो, चाहे चित्रकला की बात हो या हॉकी की बात हो, सभी ने अपने अनुभव यहाँ पे साझा किए हैं। और आप देखेंगे कि एआई का ज़माना है, गूगल और चैट जीपीटी सब में आप देखेंगे बहुत सी जानकारी सब आपको मिल ही जाती है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको सूचना मिलेगी, परंतु आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आईटीएम जैसे संस्थान में आपको आना पड़ेगा, और जो व्याख्यान है और शिक्षकों का जो मार्गदर्शन है वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और जो प्रत्यक्ष रूप से आप जो ग्रहण करेंगे, जो ज्ञान है, क्योंकि 20, 25, 30 साल के जो अनुभव हमारे जो शिक्षकों के रहते हैं वो आपसे साझा करते हैं, और जिनके माध्यम से आप फिर उन अनुभवों को हर क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी आप जाएंगे, कोई यूपीएससी, कोई पीएससी, कोई उद्योगपति बनेंगे, कोई फिल्मी दुनिया में जाएंगे, कुछ खेल में जाएंगे, तो उनका लाभ भी बाकी लोगों को मिलेगा। यहाँ का मैं जो देख रहा था, समय प्रबंधन भी बहुत अच्छा है और वो होना ही चाहिए। जिसका थोड़ा समय हो जाता तो कहीं कुछ पर्ची भी आ जाती थी, तो उसका मुझे ध्यान है, मैं अपने समय पर ही अपनी बात यहाँ पे रखूँगा। आजकल का जो समय है, आजकल का जो जमाना है, उसमें ये व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण की शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है, और कहीं ना कहीं आपको वो दी भी जा रही होगी। और शिक्षा तो दी जाती, परंतु जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो उसमें समाहित हो, और मूल्य आधारित शिक्षा, जिसमें मूल्यों का, जैसे आजकल हम देखते हैं कि अभी पंच परिवर्तन में वो बात आएगी, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, एकल परिवार घटते जा रहे हैं, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, और संयुक्त परिवार जो है कम होते जा रहे हैं। तो उस और भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है और आधुनिकता का समन्वय, इसमें हमारे सम्मानीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको गीतांजलि के माध्यम से साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने परंपरा और आधुनिकता का जो समन्वय किया, हमारी जो संस्कृति उसका वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करके, और आधुनिकता किस प्रकार से होना चाहिए वो हमारे देश को उन्होंने सिखाया। तो इसका जो समन्वय है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है उसको निश्चित तौर पे हमें पढ़ना चाहिए, आप सभी को भी पढ़ना चाहिए। उसमें वो तत्व निहित है जिसमें हमारा देश जो विश्व गुरु रहा था, और फिर भी विश्व गुरु आगे भी बनने जा रहा है, क्योंकि भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है निरंतर जो आगे बढ़ते जा रही है, और हम देखते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। तो विश्व हमारा जो सम्मान आजकल कर रहा है, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हो या हमारे जो नेता हैं, अब विश्व में जाते हैं तो वो भी अपनी हिंदी में बात करते हैं। पहले वो होता था कि अंग्रेजी में बात करें और अन्य भाषाओं में बात करें, तो लगता था कि विदेश के लोग कहते थे कि आपके देश की कोई भाषा नहीं है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार या हमारी भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार भी वैश्विक स्तर पर बढ़ा है, और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी वो तत्व निहित है, चाहे अनुवाद की बात हो या भारतीय भाषाओं की बात हो। कारण वही है कि पहले हजारों पत्र ऐसे लिखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हमारे देश में जो हिंदी है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की संपर्क की भाषा बना दी जाए, परंतु वो जो पत्र हैं वो कचरे में डाल दिए गए, और अब बिना लिखा पढ़े हमारी हिंदी है वो संयुक्त राष्ट्र के संपर्क की भाषा बन गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है। और इसी प्रकार से हम देखें